नमस्कार आज्ञा मु एडवोकेट वासुदेव सुहेत सुप्रीम कोर्ट रु गोटे बहुत पर्टिनेंट डेटा लीक केस सामना को आसी जोटी तीनटा एक्यूज्ड जो थे वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड इज लक्ष्मीकांत प्रधान जो भुवनेश्वर बेस्ड ये तीनटा एक्यूज्ड माने मिसिकी 75 crores यानी कि 750 million टेलीकॉम डेटा यूजर्स कर प्राइवेट डेटा को डार्क नेट रे लीक करके बिक्री कर देछंती। A particular case has great significance not only because personal data of so many users is involved किंतु आर नेशनल सिक्योरिटी रो गोटे मेजर सिग्निफिकेंस अछि। एथरे जो मेन प्राइम एक्यूज होची लक्ष्मीकांत प्रधान से एक्चुअली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर प्रोसिक्यूशन द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट रे तारो बेल कैंसलेशन हे जायतिला फॉर व्हिच credit needs to be given to Delhi Police Special Cell, including their public prosecutors. Unfortunately, kona heichi ki emane this particular prime accused managed to get a bail from Delhi High Court. Ethre most recent development eta ki amara team Supreme Court re, which includes Shri Narhari Singh, who is the senior counsel to the union government, including myself, our advocate Saurav Mudli. आमे ए बेल अंकर जो दिल्ली हाई कोर्ट जो हमको बेल देची आमे से बेल को चैलेंज करछु। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हियर would be that Supreme Court will now seek to decide in such cases the data of so many people is being leaked and is being sold. How serious should such cases be taken, and if the private data of private data and data protection of individuals, how best can it be protected? तो एथरे मते लागुची कि अपकमिंग डेज रे एटा गोटे सिग्निफिकेंट केस बनिवो आउ आमे सिंस वी हैव चैलेंज्ड द बेल ऑफ श्री लक्ष्मीकांत प्रधान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल विल आल्सो बी कीपिंग इट्स साइड इन द सुप्रीम कोर्ट एज दे विल आल्सो बी अ पार्टी। देखो तो एथरे तीनटा एक्चुअली एक्यूज्ड अछंती and what has happened is that एथरे दीटा एक्यूज्ड आर फ्रॉम पंजाब and one of the accused is from Bhubaneswar. And as per our knowledge and a number of victims that we represent, we have found out that कि जो लक्ष्मीकांत प्रधान अछंती से actually गोटे लैंड ब्रोकिंग टाइप ऑफ बिजनेस रे से इन्वॉल्व थिले ता माध्यम रे तांको पाखरे बहुत सारा पैन कार्ड आधार कार्ड एंड सेंसिटिव इनफॉरमेशन आस्तुला जोटा लोक माने तांको ट्रस्ट रे दउथिले इंक्लूडिंग अदर लैंड ब्रोकर्स तांको अप्रोच करथुले ए इनफॉरमेशन सहित। This information has been collected by him over a long period of time, and then he has contacted these cyber criminals, and this massive set of data has then been sold on the dark web. Ebe interesting jinsa eta ki that this is not merely about this data falling into the hands of companies, kintu this data is falling into the hands of national adversaries of Bharat. That is the biggest issue. So if such data is falling into the hands of our national security adversaries like say Pakistan or China, then there is a genuine concern ki should these three accused be treated as criminals in the ordinary course of nature, or should they be treated as serious criminals?